प्रैक्टिस करके जाओगे ना मॉक 1 मॉक 2 और जो भी हुआ यहाँ से, आप में एक अलग सी वाइब और कॉन्फिडेंस रहेगा। बोला आप क्या गिव मी दैट शिट, लेट मी जस्ट शो यू हू द फक आई एम। मैं दिखाता हूँ कौन हूँ। Yeah, definitely. I'm not the other side of the table. I'm sitting in the front and it is what it is. I'm checking that okay OIR मेरे like है नहीं है. It's not like OIR checking whether you are deserve that or not. Hello. Okay, Swapnil, how are you? Yeah, I'm fine, Deepak. Okay, so today we'll learn that how you can overcome the washout condition, right? जब आप एक washout situation में होते हो तो how you can चक्रव्यूह को तोड़ के निकलना, it's an art, it's a trick और वो comes with an experience और a practice, but वो आ जाती है, it's possible. अभी जैसे हमने काफी ट्रेंड सुना है, काफी बैचेस आर गेटिंग वॉश आउट कंटिन्यूअसली, राइट? अगर मान लो एक दिन में अगर एक बैच में 60 बंदे जा रहे हैं तो 2-4 बैच तो वॉश आउट ही हो रहे हैं ग्रुप के हिसाब से, राइट? जैसे एक ग्रुप में 13 है तो पूरा मतलब ग्रुप ही वॉश आउट हो रहा है। सो देयर इज अ रीजन फॉर दैट, बट उस चीज को आप बचा सकते हो लास्ट मोमेंट पे। सो टुडे वी हैव अ स्वप्निल हु मेड इट फॉर द एफएसबी, ठीक है? सो अभी नाउ वी विल गोइंग टू गेट हिज एक्सपीरियंस, okay, how he prepared and all those things will come later. But right, first we'll go for OIR, then PPDT, how was the situation and all those things. We'll explain each and everything. Okay, so Swapnil, you can please proceed. First, thank you, Deepak, for taking this interview. Starting from the OIR, as I practice the OIR from the Badass channel as well as other channel, but in Badass channel I find OIR a very good quality. OIR from that side, okay. So we like तो हमें वो OIR tough नहीं लगेगा in that way, okay. तो OIR खास लगा नहीं मुझे, बिकॉज मैंने जो प्रैक्टिस की थी उस अकॉर्डिंग वो बेस्ट लगा मुझे। इवन आपको टाइमिंग बहुत अच्छी मिलेगी अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करके जाते हो तो, without increasing the timing या decreasing time of the video that you uploaded on your YouTube channel. And second, OIR का as वो OIR में सबको स्क्रीन कर दे रहे हैं, and in last they take the PP and DT in which they show the story as we all know. Okay. Yeah, like my story not too good, but I learned one thing that even your story is not good, your narration is not good, but you can make the chance in the GD, which I made today. Like I made a very foolish story, I don't know, but I just made my own story which I did in my graduation. I prepared for the CAT and I made the same story, like there is some boy and preparing for the CAT exam, okay, and I narrate, even I hesitated. What was the picture? In behind there are monument types. Monument are any heritage university in which you can see the like some like 4 type structures looking behind, and there are 2 persons, one male and female. Female is like female आगे थी and वो जो male था वो पीछे था. Age can be 22. What can we assume? So I just made a story about a college student who is a BBA student. He started his preparation in graduation last year for the CAT. And then I just described how he prepared, like he take the YouTube stuff from the YouTube, he take advice from the seniors. He also joined like a test series from any coaching institute. I just added this point to them, and in narration I forget some points, and I just became hopeless, like I'm not going to make it because my story is foolish and my narration is also foolish. But when in GD start, so like life give you always a chance, as Deepak also told me, like life always give you a chance. Then I decided I will make my GD as my best. Then GD, then everyone, like most of us, like I observed that 5 or I think there is a group of 13 because there is 52 reporting. So I just observed the other story. The 5 out of 13 make a story about visiting a monument, like 2 person, male and female, visiting a monument. Okay, I observed that point. And some other person made a story about the athletes because they saw track anyway. So okay, so I did start. I just keep quiet because my story is too different from them. Okay, so I just listen them. Then I just add one point. Okay, gentlemen, as 5 out of 13, we observed that we to the theme about visiting a monument, some male and some female, whatever we can decide. Okay, then everyone start listening to me because I'm just concluding the story in that point, because they discuss a lot of things like gender, age, and all the things. I just like declaring the theme. Okay, then done.
That's the go. That's why I made this. Okay, so Yeah. what happened? Like, I think you just survived the washouts condition. What I feel from my point of view, because you're on the verge of the situation. Like how it was, like it was too chaos. People are not coming to any consensus, or they are not able to work, as a team or something. What you felt like what went wrong in that situation? Because you just survive actually. What I feel from my point, because when out of 13, 14 people, you only one is getting actually making through. That to be at the end, then there's surviving. Even I have been that particular same condition, right? So maybe I can feel the same way, because I was pretty sure if this time we couldn't make it, then it's tough, because वो time होता है. That's why definitely the time will come when you can create an impact. But for that particular thing, you should have that caliber to crack that. But that is comes with the practice, right? So you let us know a little bit, how you able to overcome that, just survive, how you can survive the Bosworth situation, right? Because I know you are capable. A lot of people are capable enough, but sometimes things happens. In our practice session, also things goes out of the track multiple times. Even I keep on telling multiple, it's a group objective, it's a group objective, it's a group objective. But people don't listen that, right? So what do you think, like how things went in your scenario? Because people told me, they did some silly mistakes when they, something, someone taken their name कि ठीक है आपको नरेट करनी है स्टोरी. से तो शॉक, ओके मेरा नाम किसने ले दिया, मैं कैसे बोलूं स्टोरी. वो इतने शॉक में थे कि उन्होंने अपनी स्टोरी बोल दी. They told their own story. That's the biggest mistake. And second, I think जब खड़े हुए जब मौका दी, तो they didn't, address the group. Okay, gentlemen, thank you so much for everyone for this wonderful opportunity. Then you will narrate this thing to your officer, right? But they just stand up, Yeah. okay, and and then tracked out immediately. So from in your group, what happened in that particular time where you went out Yeah. of the rail? I want to add that, like, if your story is totally different, so I just think that you have to avoid the start, like start the discussion, because your story is too different from all of them. So let them start. Okay. After that, just conclude the majority part, like the what the majority are going to agree with that, and conclude that part. Okay, which I did. Like they are going with the monument themes, and definitely there are some like a negative person who always point to negate you, like you are wrong, you are wrong. So let them saying you like you are wrong. Okay, just ignore नहीं them. क्या हुआ क्या Like था वैसे एक्चुअली बेसिकली हुआ क्या था उसमें कौन क्या बोल रहा था आपको someone selling something yeah, as my chest number is 7, I am just middle of the in the front of the G. Okay, so I think the chest number is 12, who is a very he's a very like a bold person. He start okay. like wait. Let me speak one by one. Let me speak one by one. His line is let me speak one by one. So we have a okay. So we just chance. Okay, so he started narrating his story again, like some 2% going to athlete. They won the match and all the things. Okay, then he just finished this. Okay, then my right part, as I am middle in the right part again contradict him, like how can you assume that there is athletes. Okay, then I think there is a contradiction between their thoughts. So I just I just come with an idea. Okay, I think we have a two team. So let's make a story about the concluded thing. Okay, like there are two very good in athlete, as we can see that there is a perfect athlete body in the picture. Okay, and let's make the story like they are too good in athlete in their college, and they also plan a trip for the visiting a monument in Jodhpur, and they are going to the Jodhpur. Then he just again contradict. Okay, how can you say that कि athlete आपका athlete जो वहां जा रहा है monument visit कर रहा है. Okay, तो let him speak. उसने मुझे मौका दिया. Let him speak what he can speak. तो okay, सब शांत हो गए. मतलब It's just ओके fight between. फिर तुम्हें मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली उसने पैर राइट दैट्स हाँ व्हाट वो इट हाँ वो और सब डिड ओके एटीट्यूड. ठीक है, इसको बोलने में देखता हूँ क्या बोल लेता है ये. मैं हाँ कहा क्या ठीक है. 40 सेकंड मुझे आई थिंक तो सब शांत हो गए, मुझे सुन रहे थे. तो जैसे बात है मेरी फ्रेंड थी, तो मैंने एक चीज की कि मैंने लाइक आई डिडंट डिस्क्राइब द माय ओन स्टोरी. आई जस्ट गम the group story, like monument theme and the athlete team. So I just conclude that this is the athletes who made a very good marks, who made a very good performance in the athletes criteria in athlete field, and they decided to visit a monument for the celebration, and they went to the Jodhpur and then booked the tickets. They click the photo of. I add the points of the person, like they also included a point like they take the weapons photo and also manuscript. मैंने सबके point add किए जो उन्होंने बोले थे. Okay, and they in last मैंने अपना एक point किया. They also shared the photo on social media and tell the people how they reach
there and the hotels and all the things so people can get easily that place. ये सब मैंने ऐड किया. फिर वो कॉन्ट्रडिक्ट किया, मैंने इग्नोर कर दिया. मैं कहा ओके ठीक है, योर पॉइंट इज अच्छा, आल्सो ग्रुप राइट, में बट डिस्कशन में G2 चल रही चीज, राइट? इन द ग्रुप डिस्कशन ओनली ही गिविंग यू चांस. आपने 1 मिनट तक, आप 30-40 सेकंड तक बोलते रहे होगे, सब लोग सुन रहे होंगे. ओके, फिर उसने फिर कॉन्ट्रडिक्ट किया. how can I speak like that much? But I just speak because I did the practice from your group. I always try to from Deepak. It's not a praising. Like I learned from the Deepak, the PPDT group. We have tried. Deepak always telling that this is not like a debate. It's a discussion. So either your story is different from the group. You have to try to conclude the story. You have to आपको एक आनी होती है. Either your story is different, but you have to आपको करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है अपने थॉट से. तो बस मैंने वही किया. मैंने अपने थॉट से मेरी स्टोरी कहाँ चलेगी किसी को नहीं पता. इवन द आफ्टर रिकमेंडेशन पीपल आर टॉकिंग मी यार तुम्हारी स्टोरी क्या थी तो तुम रिकमेंड हो गया. मैं कहा मेरी स्टोरी तो कुछ आई नहीं हुआ बीच में. मेरी तो एक कैट की प्रिपरेशन की थी. आई जस्ट नरेट योर स्टोरी. Yeah, that's the. And in the last, they start the selecting who is going to narrate. So I also prepared for the narration. मैंने स्टोरी 40 सेकंड में बोल ही लिया था, तो I had all story in my mind. Repetition ही था types. It was a repetition, right? And the story was making sense actually. तो बोलना. Literally. तो मैं कर दिया. मैंने कहा ठीक है. तो एक मैंने चेस्ट नंबर 4 बहुत देर से बोलने का ट्राई कर रहा था. मैं कहा लेट हिम स्पोक. ही स्टार्ट. तो उसने बोला. उसने क्या किया कि मेरी स्टोरी को फिर से अच्छे से बोला उसने, और अच्छे से बोला. मैं कहा ठीक. फिर जब नरेशन की बात आई तो 12 तो मुझे बोलता नहीं, उसने उसको नरेट कर दिया, नॉमिनेट कर दिया. मैंने कहा ओके आई एग्री विद हिम. मैंने उसको भी क्या सपोर्ट कर दिया. तो जीटीओ का माइंड में आया कि ये बंदा मतलब ठीक है, मतलब कि इधर उसने उसका कॉन्ट्रडिक्ट किया बट उसने उसका सपोर्ट कर दिया. मैं कहा ठीक है, आई गो विद हिम. फिर एक बंदे ने बोला चेस्ट नंबर 7 नरेट करेगा, लेकिन जीटीओ ने इग्नोर कर दिया. सुना नहीं, पता नहीं क्या हुआ. मैं कहा ठीक है सर, ओके आई एग्री विद द चेस्ट नंबर 12, लेट्स वी गो द. तो उसने फिर नरेट किया. हालांकि उसने स्टैंडिंग खड़ा हुआ और स्टोरी नरेट किया, अच्छी नरेट की उसने. फिर उसने अपने कुछ पॉइंट भी ऐड किए. मेरे पॉइंट तो कुछ थे नहीं, मैंने सबके पॉइंट कंक्लूड किए थे. तो बस ये हो गया. लास्ट में ऑफिसर ने एक चीज पूछी, क्योंकि इसमें 2 कपल दिखाए थे, मतलब एक मेल एंड फीमेल था. तो उसने पूछे कि ये जो मेल फीमेल थे वो एक ही होटल में रुके थे, अलग होटल में रुके थे. तो उसने बोला सर अलग अलग होटल. मतलब जीटीओ भी मतलब ठीक मौज में था बंदा मतलब. तो बोले तुम्हें कैसे पता? बोला सर इट्स माय पर्सनल थॉट. तो उसका जवाब अच्छा था. तो मैंने कहा कि ये तो बंदा रिकमेंड हो जाएगा यार, मतलब अच्छा है. देन बस जीडी फिनिश हुआ. उसने बोला 1 मिनट लास्ट. जीडी फिनिश हुआ, उसके बाद हम लोग बाहर गए. तो वो जो बंदा 12 था बोला यार तूने यार बहुत गलत बोला यार, तू यार पूरे ग्रुप वॉश आउट 12 नंबर. मैंने कहा तेरे को बोल रहा था पूरा ग्रुप वॉश आउट करा देगा. मैं कहा ठीक है, अब क्या ही कर सकते. आई जस्ट पुट माय पॉइंट एंड यू डिड योर जॉब. तो बस उसके बाद रिजल्ट आया. एंड fortunately or unfortunately, but I think I did my job I did my best in the GD. Yeah. Then he said that unfortunately we are going to select only one person and this is chest number 7. And I made it. Yeah. बस you know Swapnil, basically चीजें होती क्या है, in these things, how things work actually. You have to contribute. I'm keep on telling things from beginning. Now you have to compromise on your story, because if your story doesn't it's literally sometimes making sense, but it's a unique story. But with that, you can't come to the common group stories, no? Maybe you can put up some of the things like, hard work, perseverance, and all those things, day night working. Sometimes same things you can, like preparation for CAT or GATE or something, or any ND exams, to put a lot of effort, daily. The same routine you can put up some physical exercise the athlete was doing, right? So it's kind of contribution from your this skills to that particular thing where the group is going. And if it is 2 groups, that's a wonderful thing you did actually. You combined both the stories and come up with a that's why I tell under the umbrella situation, where you combine all the story, put up under the one umbrella, right? Athletes were there, they did their exercise, competitive participation, and then the next part is they, went outside for the monument or some visit of some temple or whatever is there, right? But वो बंदा था शायद उसने वो चीज मेरे सेशन सुने नहीं होंगे पहले. What I feel, I keep on telling from starting. He's not. What? He is not from your session. Okay. No problem. Everyone, something. But, sometimes you have to understand things. It's a group objective. Okay. Swapnil, anything you want to tell to audience? What is your opinion or points, about your PSB experience? Anything you want to share with them? What they should do or what they should not do? ये चांस तो कभी देना नहीं है किसी को बीच में बैठ के. Okay, gentlemen, you speak. Right? तुम्हें बोलना है, तू बोल चल. वो तो बहुत बड़ी मिस्टेक की थी उसने. That was the biggest mistake he did actually.
Yeah, I want to add one point like whatever you did in your story, it's a unique story. That doesn't matter because it's your own thought, as Deepak also did. And the umbrella point, like I learned from the Deepak, like umbrella मतलब कि उसके जो सारे arrows होते हैं वो different points पे होते हैं, सबको points कहते हैं, but they meet in the same end. वो एक ही जगह पे आके मिलते हैं. So try to come to that point, like आपको उसी point पे मिलना है. Then you are going to narrate the story. And try to give a unique idea about the story. इवन दिस इज आइडिया फ्रॉम द अदर पार्ट, आपके किसी और पार्ट से आइडिया आ रहे हैं, आप उसको पॉइंट आउट करो, इट्स योर गुड पॉइंट. एंड प्लीज ट्राई टू अवॉइड द सेइंग नो or negative things in the group. If anyone's saying the point, just appreciate him, like yeah, we can consider this point, but try to not like negative मत हो यार, कुछ भी हो negative मत हो, try to be positive. मुझे लगता है कि अगर मैंने वो चांस नहीं लिया होता उस पर्सन से तो मेरा ग्रुप वॉश आउट था, बिकॉज आई वाज इन ग्रुप 1 and group 2 and group 3 is also was out at the same time. There are only there are only 3 recommendation out of 52%. Okay, 52 में से केवल 3 लोग को लिया. ओके, आई थिंक एक बैच से 2 लोग को लिया था, मेरे बैच से एक को, और 2 ग्रुप को पास आउट कर दिया था. तो आई अवॉइड दिस कंडीशन, लाइक इट्स ऑन यू, लाइक यू आर गोइंग टू आर वॉश आउट और यू आर गोइंग टू मेड इट. सो आई with myself, and also a big thank to Deepak because they also consider the OIR as well as the story. And what I feel, Swapnil, maybe people are not hitting the benchmark, maybe OIR1, OIR2 and OIR especially, what I feel. थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गलती कर रहे होंगे, इसलिए maybe there's a high chance that they're making washout people. OIR is equally important. People feel like it's not that important, but I think if you are making through, they're considering you only maybe if you are OIR1 or 2. If you're below that, they are not considering. Well, they'll see you in the borderline or something like SSB. Combine all this in. But once you have an opportunity, अगर सब कुछ तो अवेलेबल है यार, और क्या दिया जाए, फ्री में ही तो सब कुछ था, अभी थोड़ा डाल दिया मैंने, बट लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल है यार, उतना ही प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत है. या दीपक, एक चीज होती है ना जो आपने मतलब मुझे लगा कि बहुत अच्छी लगी. देयर आर लॉट्स ऑफ चैनल हु आर गोइंग टू कंडक्ट अ पीपीडीटी सेशन एंड द जीटीयू एंड ऑल द थिंग्स, बट द वन थिंग व्हिच आई फाइंड अ यूनिक, like it's like a discipline, and which you are going to armed forces of in any forces like Air Force, Navy, Coast Guard or Army, and which you like taught us like we have to come in the very formal set. Even today I came in a formal dress because I just respect the discipline which you are taught us, like जो आपने सिखाया है, तो I just या नहीं यार, मुझे डिसिप्लिन में रहना है. एंड इवन सो वो अच्छी लगी कि मुझे जो ये कंफर्टेबल था ना कि आप फॉर्मल बैठे हो, बिकॉज हम एक ही दिन बैठते हैं पीपीडीटी में वगैरह, हम तो प्रैक्टिस तो हम फॉर्मल में करते हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा ऑड नहीं लगा कि यार मैं फॉर्मल में बैठा हूँ, इनफॉर्मल बैठा हूँ, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल ड्रेस फॉर मी. तो वो मुझे अच्छा लगा ना यार, ये तो मैं प्रैक्टिस किया हूँ. सो आई जो ड्रेस थी वो कंफर्टेबल थी मेरे लिए, तो ये अच्छी चीज थी. मतलब आई जस्ट लाइक वन थिंग, लाइक वन बेस्ट थिंग कि ये जो डिसिप्लिन था ना, विच आई मतलब मैं बहुत दिन से सोच रहा था कोई ऐसा बंदा मिले जो डिसिप्लिन कर दे. आई जस्ट फाउंड योर चैनल, इट्स अ वेरी गुड यार. तुम आगे इट्स आई थिंक ये फर्स्ट टाइम केम टू अवर चैनल लाइक ना कि नहीं टी शर्ट पे बैठेंगे, तो आई आस्क यू टू चेंज इट इमीडिएटली ना, राइट. एंड आई to add one point, in first day of my PPDT session in your channel, I just came into the sweater. You just asked me, Swapnil, this is not going to work, you have to be informal. मैंने कहा यार ये क्या बात होती है यार, मतलब इतना डिसिप्लिन कौन दिखाता है. आई जस्ट रजिस्ट बिकॉज किसी भी चीज में चेंज होता है तो रजिस्ट आता है. तो आई लर्न दैट ओके यार, मतलब इतना क्या ही फॉर्मल कर लेंगे. बट इन डे 2, डे 3, डे 4 आई जस्ट ऑब्जर्व दैट नो यार, इट्स ही इज जस्ट गोइंग टू टीच अस हाउ टू लाइक मेक योर पैशन. लाइक जॉब तो सब लोग करना चाहते हैं आर्म फोर्सेस, बट इसको पैशन बनाना आई जस्ट लर्न फ्रॉम यू, लाइक हाउ आई मेक इट द पैशन. सो या, यू इनकलकेट द डिसिप्लिन Well, फ्रॉम thank दैट you so पार्ट. much, Swapnil, but actually I'm not the right person for that. Okay, but anyhow, see what I tell people right from beginning. Remember, you should follow some 4 5 principles, right? Always in life, try to maybe whatever you getting success, maybe you'll get 6%, 2%, 3%, maybe you're on some purpose, mission, goal. There's some parameters you should follow very strictly. Okay, number one, I'll tell you 5 6. I'll tell you today. Okay, right? Maybe the users can listen to that. Number one, yeah, always keep yourself physically fit. Okay, that's a very, very important thing. That's why now I'm stressing more into physical fitness. Right? And the secondary thing, dress well. You dress to impress. I mean, if you're physically fit, whatever you wear will look good on you, right? That will give you somewhat confidence. Yes or no? Right? And the next part is that do what you're really afraid of on a daily basis. कोई एक ऐसी चीज करो जिससे आपको डर लगता हो डेली. So it will help you to conquer your fear. जैसे काफी लोगों को लड़कियों से बात करने में डर लगता है. It's a normal trend. That's why I'm telling you that.
किसी लोगों को काफी मतलब काफी ऑफिसर से, पुलिस से बात करने में डर लगता है. यू सी एनी पुलिस पर्सन, टॉक टू देम. ट्रैफिक पुलिस वाले से बात करो. सम पीपल हैव दैट फियर. कोई लड़की देखे नॉर्मली हाय हेलो करो, दैट्स ऑल. Right? And the fourth thing is that do one thing what 90% of people are doing on a daily basis around you, especially anything. Maybe you do coding, you do dancing, maybe you do singing, you do running, anything. And the next thing is no fap, like masturbation and all those things, right? And once that thing will over, no fap, we call it, it's a trend nowadays. That's conserve or preserve your energy. That is very powerful thing. And the next thing you do meditation. And when you combine those six things, now you definitely, it will take it's a painful process of 1-2 months. But once you, put that thing on a track, it will become a habit and you'll not feel tired or something. You'll have a very strong confidence, unbeatable, unshakable mindset. Right? So that's what I was, keep on telling people. The discipline main purpose is that I don't care, maybe I'll get people or not for maybe I'll get, 10 to 15 people for PPDT session or any other thing. But I want someone who are very serious about it. It's not about money. Even though the price I'm charging is very minimum charges, very very minimum. Yeah, one night dinner charge. 1 night dinner charge if you go out. No, if you go out single, I am saying, right? If you go out single, Yeah, if you go double, yeah. So it's go out 500, single. 600, right? Yeah, pure and single. Yeah, it's good. Yeah, that to be 7 days. That to be. What do you feel about it? It's good, bad, negative, whatever it comes in your mind, just you can speak up. No problem. Again, negative, positive point about your PPT Yeah, session or something. yeah. To be honest, like OIR मेरे लिए best था, because there are lots of channel on YouTube, but their timing and their content is not too updated. But you provided the updated content as well as the one thing I want to add, the mirror image. Like you did the like आपने जो वीडियो बनाई है वो काफी कॉम्प्लेक्स मिरर इमेज थी. The people are going to make that जो इसमें पूछी जाएगी, it's a very, and also the like a word formation, like जो वर्ड आपने दिए थे उसमें दे सेम वर्ड्स, लाइक 2 to 3 वर्ड्स आर डिफरेंट, 10 वर्ड्स थे, मुझे You ऑल have ऑफ taken सेम लगे. subscription. नहीं, आपने membership join की थी क्या? Mock 1, Mock 2 के लिए? Yeah, I have taken the subscription in YouTube channel. हेलो स्वप्निल, आवाज नहीं आ रही. हाँ बोलो, क्या कर रहे थे? Yeah, yeah, I did the mock 1 and mock 2, and in अच्छा, आपने सब्सक्रिप्शन लिया था? yeah, Yes. I did. Yeah, I have taken the subscription. Okay, Yeah, so I just how the mocks are? Mocks are similar to it or something different? It's totally exactly the same, right? Questions, everything, timing. yeah, not simple. It's like high level. If you squat in that time without pausing the mock, so just give your mock and don't demotivate with that the score. Try to make your score and try to make that question in that time. Okay, if you are going to make the question in that time, then in the OIR in PSB you are going to crack it. Okay, there are no hurdles. And the other part is the like the section 7, like counting the alphanumeric series. I got a very, because you upload I think 10 plus video in that series. Okay, and the same like a number of n, number of M, the confusing pair like N and M, we are going to And confuse, M, and M, H and and 8. I, H, and all the things. Yeah. Like and एक कॉर्नर देखना होता है एम में, तो आई जस्ट फाउंड वेरी इजी, लाइक मुझे बहुत इजी लगा. इवन इन द सेक्शन 20, सेक्शन 7 दे आर नॉट गोइंग टू एक्स्ट्रा टाइम. आपको 5 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं कि आप फिलअप कर लो. 8-7 सेकंड देते हैं तो आपको 7 सेकंड क्या और कम ही देंगे. लाइक ये हिडन पार्ट है, वो कितने सेकंड देंगे आपको, तो नहीं, आपके पास actually, इनफ टाइम है. हाँ सर, बिल्कुल. या तो वो जैसे कि इन दीपक वीडियो दे रहा है 2.5 और 3 सेकंड, दैट्स इनफ यार. मतलब जो दीपक ने बताया है, अगर आप उसमें टिक कर ले रहे हो दैट्स इनफ टाइम. आप उसमें टिक ही करो. और जो OIR वहां के, अगर आप यहाँ टिक करते हो इन दैट यू आर गोइंग टू टिक ओनली द इन PSB यू आर गोइंग टू इनसर्कल ऑल द क्वेश्चन. अगर आप 7 सेकंड में प्रैक्टिस करते हो ना, तो यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट यार. मतलब आप 7 सेकंड में काउंट करके आंसर ऑप्शन को सिलेक्ट करके इनसर्कल नहीं कर पाओगे. बिकॉज जैसे ही वो PSB ओवर हो रहा है, दे आर जस्ट सेइंग दैट लाइक रेज योर हैंड. सो आपको अपने हाथ उठा लेने, एवरीवन रेज योर हैंड. सो यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट इन सेक्शन 7. सो try to practice that mock from that your website. Yeah, it's a very helpful. Yeah, in every section, mirror image, talking from the start, mirror image, and counting the figure, and the other part is blood relation also. Memory. Blood relation, I think quality content, right? In mock 1, mock 2, top notch.
Yeah, and blood relation, I want to add one point. Like in PSB, they also giving the rough sheet. So if you are having a problem, okay, like in blood relation, to try to practice the blood relation in 30 to 35 seconds because they are going to 60 seconds. Okay, so try to make it a habit, like a solve in verbally because try Exactly. मतलब आप लिखने का प्रयास मत करो, but या अगर हार्ड क्वेश्चन है तो ट्राई टू राइट इट इन वेरी शॉर्ट फॉर्म. ओके, गोल सर्किल में फीमेल होती है, क्रॉस में मेल होता है, ऐसा करके आप कर लो, आपको टाइम मिलेगा इनफ. ब्लड रिलेशन बहुत इजी है, मतलब पॉइंटिंग मैन ही आता है मोस्टली. पॉइंटिंग अ मैन सीज अ वुमन वुमन, तो आप कर लोगे, कोई इजी टफ नहीं है. इफ यू आर गोइंग टू दैट बैडैश मॉक, देन हाँ, यू आर गोइंग उसके टू मेक इट बाद यार उसके सिंपली. बाद तुम कर पाओगे, सीधे जाओगे तो मुश्किल है। राइट। And also, Deepak advised me to like practice the blood relation question from the India base, and I did the same thing in the yesterday night. I practiced the I think 50 questions India base, and they are just clearing the concept of the sister-in-law and brother-in-law. बेसिक। They asked three questions from the तीन क्वेश्चन थे in-laws के form में. So I didn't find anything difficult because I did the practice from there. आप यू नो So व्हाट आई it's एम सेइंग, यू गो थ्रू द इंडिया बैक्स फुल ब्लड रिलेशन, देन कम टू माय थिंग, दैट वुड बी इजी फॉर yeah, यू टू। then और ब्लड रिलेशन बहुत जरूरी है आपका, 3-4 दिन डेली आपको 1-2 घंटा ब्लड रिलेशन को देने से आपके दिमाग में बैठ जाए वो रिलेशन, तो आप इमीडिएटली ओके ओके खट से सॉल्व करो, बहुत 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 जल्दी हो जाता है, ठीक है। और व्हाट अबाउट पीपीडीटी, हाउ यू लाइक यू हैव टेकन डबल टाइम राइट, फर्स्ट टाइम यू पेड बट कुडंट अटेंड प्रॉपर्ली, सेकंड टाइम यू अटेंडेड, आई थिंक व्हाटएवर आई कैन गिव फ्रॉम माय एंड आई डिड इट। ओके, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग पीपीडीटी, लाइक वुड यू yeah, suggest recommend people to join that? Because same like army, navy, air force people, anybody can join, it's the same thing, right? Yeah. In PPDT, like in first session, as I am working, so the timing is too tough. Like I have, मुझे बहुत time लगा manage करने में because I also have the meeting at that time. So मैंने manage किया किसी somehow, and मैं मतलब first time में मैं paid तो कर दिया था, but मैं 3 या 4 ही class hardly ले पाया. But then I thought that यार ये ऐसे होगा नहीं, मुझे I have to practice more because OIR तो मैं practice कर रहा था website से. Then I just came to know that कि you are going to launch another batch. So I just want to enroll that. So I just texted you as we have a talk, very Right. silly talk with you. So I made the payment and I become the part. In that second session, I just missed I think 1 or 2 sessions because of my meeting because they are going to same time. And then I just take a leave from that meeting also कि यार मुझे अब leave लेनी है, 15 दिन की 10 दिन की जो भी मिले मुझे ये अटेंड करना है बिल्कुल fearlessly. सो आई जस्ट मेड इट. मैंने काफी किया और सेशन में मतलब पीपीडीटी सेशन इज बेस्ट. मतलब देखिए, आप जो स्टोरी बनाना आप सीख जाओगे, आप 4 सेकंड में 4 मिनट में आप लिखना सीख जाओगे. इट्स अ गुड थिंग. और समटाइम दीपक ऑल्सो टोल्ड दैट कि अपनी स्टोरी सेंड करो सडनली रैंडमली. फाड़ दो, सो फाड़ के फेंक दो। हाँ, फाड़ के फेंक दो, पीछे रख दो, एंड द सेम थिंग कि या वो आपको पढ़ने का मौका नहीं देंगे. आपका मतलब ये पीपी खत्म होता है, पिक्चर परसेप्शन, उसके 2 मिनट बाद ही आपको जीडी में बैठा देते हैं. 1 मिनट के लिए आपको स्टोरी देंगे, इधर यू आर गोइंग टू, तो वो स्टोरी देंगे. तो बट यार दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यार. I just forgot the my main character name, Ravi or Rahul, but they just ठीक। gave the story. They call the name Rahul. It's a Rahul. I just yeah, मैं भूल गया था नाम कि क्या है नाम. बस You know, I Swapnil, made it so यार. that is the reason what I'm training you people to for the worst situation, worst condition. साला खराब से खराब क्या हो सकता है? अब मुझे बताओ खराब से खराब क्या हो सकता है? तुमने अभी स्टोरी लिखी, वो छीन ली और तुमको पढ़ने तक का मौका नहीं था, बोला इमीडिएटली बोला बोल, Yeah, we are राइट? ready for that. इससे बुरा क्या हो सकता है? And I'm in training for, I'm in training you people 7 days, 10 days, 20 days for that particular thing only. Don't you think आप वहां जाओगे, जो बंदे को 10-5 मिनट लगते हैं स्टोरी को रिकैप करने में, वो तुम्हें रिकैप करने में 2 से 3 सेकंड लग रहे हैं. डोंट यू थिंक यू गोना परफॉर्म वेरी वेल ओवर देयर? साला फाड़ के रख दोगे तो यार, आग लगा दोगे तुम. बंदा भी सोचेगा बहन चोद ये कहाँ का बंदा, क्या है साला, अभी पेपर लिया, हम साला स्टोरी नहीं बना पा रहे, रपट रपट खेल दी, बोलेंगे रट के आया है, हाँ, राइट? yeah, sure. सो दैट्स अ Yeah, पावर. और जैसे ओआईआर का मैंने जो टफ किया हुआ, टफ नहीं, इट इज द रियलिटी. यू नो व्हेन यू सिट इन द एग्जामिनेशन रूम ना, आपको यू नो 7 सेकंड भी 3-4 सेकंड लगेंगे. अगर मान लो ऊपर के आप क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के 2-3-4 आप सॉल्व नहीं कर पाए ना ब्लड रिलेशन के, तो पांचवा क्वेश्चन अगर इजी भी होगा ना, तब भी आप पे इतना प्रेशर कर देगा, आपको 7-10 सेकंड भी आपको 3 से 4 सेकंड ही लगेंगे. और जब आप इतना प्रैक्टिस करके जाओगे ना, मॉक 1 मॉक 2 और जो भी OIRs है, आप में एक अलग सी वाइब और कॉन्फिडेंस रहेगा. बोला आप है क्या, गिव मी दैट शिट, लेट मी जस्ट शो यू हु द फक आई एम. मैं दिखाता हूँ कौन हूँ. yeah, definitely. I'm not the other side of the table. I'm sitting in the front, and it is what it is. I'm checking that okay,
वो यार मेरे लायक है नहीं है. It's not like OIR checking whether you are deserve that or not. Hello? ये आवाज मेरा नहीं जो 5 डिग्री क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है. ओके, आ रही. हाँ, इट्स इजी यार. तो मैंने इससे 3D किया है, ये तो 2D है. 2D है. सो ले man. क्या है, मैंने तो पूरे 5 या 6 सेशन लास्ट में आपने शायद 2 सेशन 3D पुट किए है ना, मतलब उसमें. हाँ हाँ, मैंने डाले हैं 3D. वो मेरे प्रीमियम में डाल 3D की, दिए. या मैंने वो 3D की प्रैक्टिस की कि मैं 3D भी वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चला था. मैं क्या कि दीपक ने बोला है कि यार वर्स्ट केस लेके चलो, कुछ भी पूछ ले, यू आर गोइंग टू द वर्स्ट. लाइक वन थिंग, लाइक जहाँ किसी की कलम ना चले वहां आपकी कलम चले. तो आई जस्ट और फॉलो ऐसी दैट चल स्पिरिट. और ऐसी चलनी चाहिए, ऐसी चलनी चाहिए, साले जिंदगी में किसी की नहीं चली. या दैट्स पावर द के थिंग साथ. यार. Right? या So I think something like you are in a full josh or energy. I think you enjoyed our PPT session also, या right? एंड आई Uh, like the PPDT session is not only the oriented for the like a PSB in the Coast Guard. If you want, like if anyone want to like meditate a part in either it's a technical entry or FCAT or CDS, they can join the group. And definitely, yeah, if they are going to present in all the 7 days or 8 day session, they are definitely going to make it. Yeah, it's a very easy if you're going to. Yeah, and Swapnil, what I feel, whatever we telling in 7 days, we giving more than that. What I feel. It's not like only what we have mentioned. Only 1 hour means 1 hour. We just want to go home, take care. It's not like that, right? We're pushing it. Yes or no? Sometimes morning yeah, class also. definitely. या डेफिनेटली यार, मतलब कि आप 25 दिन एक ही चीज को सिखाओगे, इससे अच्छा है कि 7 डेज में इसको आप ट्रेन कर दो विद डिसिप्लिन. सो वो मैंने सीखी है कि 7 डेज में आप ट्रेन हो सकते हो. नहीं ठीक है. पीपीटी यार, इट्स लक बाय चांस आल्सो एट द एंड ऑफ द डे. आप कितना भी कोचिंग लो तब भी अकेले के गड़बड़ हो ही जाती है, राइट? And I think tomorrow is the last batch for some law candidates also appearing. Let's see what is their feedback on that, right? Or next, what else we have? Nothing, yeah. No, I think so. People like the content. Some people hate it. I don't give a fuck or care about them. Okay, that's not my या power. That's right. Some people were like या joining, not very formal, coming like this time I'm planning to increase the standard little bit also. I'll not be much money oriented. Okay, this time I'll ask people to do some push-ups, 30 push-ups before joining session daily. Okay, so that will 7 days, 30 push-up daily before the class, and then we will start the session. Okay, you don't like it, you डेफिनेट. can take your money, get lost. I don't need you. I'm not here to please or happy to make you satisfy you. I'm here to work on something, work towards your goal, purpose, mission. अगर 30 पुशअप या तुमसे नहीं हो रहे और तुम मुझे बोल रहे हो सर पैसा दे रहे हैं हमें सिखा दो, नो. See, IITs, NITs, you can't get it easily. You have to prove your caliber to get through. Maybe IIMs also. You have to qualify the exam. Right? It's not about the money डेफिनेट. you pay. 6 crores so money, then also you can't. If it is not executive MBA or anything. But you can't pay and pass IIT or GATE, right? Yes or no? You can't. या यार, आप पैसे से खरीद नहीं सकते हो सीट्स को यार. अगर आप में कैलिबर है तभी. इवन आप वहां चले जाओगे, सस्टेन नहीं कर पाओगे, वहां बाहर आ जाओगे. Yeah, look, see, I'm not saying that you have to be in that. 100 of channels are teaching you, go learn from them. It's not a big deal. I don't need 100 people. I need only 10, 20 people who are really passionate. ठीक है ना, जो सही में एफर्ट लगाना चाहते हैं. People like, sir, one guy is there in the group actually today. He is commenting कोस्ट गार्ड के बारे में काफी उल्टा पुल्टा बोल रहा है. मैंने ठीक है यार, नो प्रॉब्लम. जी या या आई ही आल्सो रीड दैट. उसको मैंने फ्री सेशन दिया था. अपने बोला सर गरीब हूँ, पैसा नहीं, नॉट गरीब में, पैसा नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, आपको उसके बाद दे देंगे, ये दे देंगे. मैंने ठीक है, यू प्रूव योर कैलिबर इन 1 वीक ऑफ मंथ. अगर तेरा लास्ट वीक में अगर मेरे को अच्छा लगा, तेरा टॉप नॉच का इंप्रूवमेंट दिखा, आई रिफंड योर मनी. तो 1000 दे, 2000 दे, 500, 300. हर बैच में एक टॉप बंदे का जो भी बेस्ट परफॉर्मर है उसका रिफंड है पूरा. अब इससे ज्यादा क्या दिया जाए मुझे बता, और क्या बताऊं यार मैं. व्हाट एल्स नहीं. कहना है कि 1000 में सिलेक्शन नहीं होता तो 150 वापस काट के भी दे दूंगा तो मैं यार 850. नंबर वन. और जो पीपल बेस्ट मैं उसको भी दे रहा हूँ, रिफंड दे रहा हूँ, और क्या करूँ इससे, तो व्हाट एल्स आई कैन गिव. अब इसके बाद भी तुम लोग नहीं एफर्ट लगाना चाहते, दैट इज योर प्रॉब्लम. व्हाट आई फील फ्रॉम. पीपल जो वो यार उन 300 के बारे में सोच रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग, मतलब वो सीख नहीं रहे कि यार वो 300 रुपए छोड़ो, हम सीख क्या रहे हैं, मतलब पीपीडीटी सेशन से या ओआईआर सेशन से. तो लाइक वी हैव टू लर्न दैट थिंग, नॉट पैसे यार. मतलब आप तो 20,000 दे के आप कोई एकेडमी ज्वाइन करते हो, अगर आपको वहां से नहीं होता है, यू नॉट गोइंग टू ब्लेम हिम लाइक मुझे पैसे वापस करो. इवन इफ समवन इज गिविंग यू चांस टू टेक योर मनी, इफ यू आर गोइंग योर बेस्ट एंड यू आर नॉट रिकमेंडेड इन पीएसबी, यू कैन टेक योर मनी बैक. दैट्स अ गुड थिंग यार. You're a generous person, like you are going to refund the money in that person कि आप रिकमेंड नहीं हुए, पैसे वापस दे लो. Because I think no other institute who was going to give the money back यार. So it's a good thing, it's so generous, like you are आप समझ रहे हो दूसरों की मजबूरी को ना यार. नहीं यार, उसका नहीं हुआ तो
Yeah, कोई so बात ये नहीं, आप अच्छी बात है. गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, प्रूव योर कैलिबर. Yeah. मार के दिखा, नहीं मार के दिखा, 40-50 पुशअप मार के दिखा, रन 6 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, दूंगा तेरा पैसा वापस. आई रिफंड यू, तेरे को फ्री में दूंगा कोचिंग एक वीक की, बता. बट यू शुड प्रूव योर कैलिबर. अगर 30 मिनट में 6 किलोमीटर करके दे रहा है मेरे को, यू टेक योर मनी, आई ट्रेन यू फॉर फ्री. 1000 रुपीज मत दे. आई डोंट केयर, तू गरीब है ना, तू गरीब पैसों से है, फिजिकली मेंटली तो नहीं है ना. वो तो कर सकता है, रनिंग करके दिखा सकता है ना. गिव मी यू नो 6 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, मैं तेरे को अभी उठा के दूंगा. हाँ, डेफिनेटली यार. राइट. पैसा किसी तो में तो फिजिकल आप. स्ट्रेंथ है, वो करके दिखाओ. और मुझे मजा भी आएगा अगर Yeah. ऐसे बंदे को मैं ट्रेन करूंगा, ऐसे बंदे को मैं सिखाऊंगा, तो मुझे मजा भी आएगा. राइट, जो कैलिबर का बंदा है. एंड आई लाइक, मैं बहुत ही मतलब वेट कर रहा हूँ फॉर द एफएसबी सेशन इन योर चैनल यार. सो प्लीज लॉन्च एन एफएसबी लाइक फॉर द लेक्चरेट एंड द जीडी आल्सो, so we can we will make the FSB part also यार. Okay, okay, do one thing. जो भी trending topics you know or something like that. Okay, do share with me with proper format. So I'll start from tomorrow, or Saturday we'll start. PPDT Yeah, Saturday. Tomorrow I I am won't charge. उसमें that is for free. But anyone who want to pay something amount from their point pocket or donation kind of thing, it's okay. And PPDT I'll start for all the people soon. So I'll keeping one batch for GD, GD1, GD2, and lecturate, and one batch for PPDT. PPDT is to be the paid batch only. There will be no change in that. Okay. Again, I have to stress, I didn't sleep from last 24th of December properly. जिस बैच में तुम्हारा प्रॉब्लम था ना कि तुम बोल रहे मुझे इस बैच में डाल दो, क्यों? तो बाद में सेकंड बैच में मेरे पास 10 बजे वाला कोई बैच था ही नहीं अभी. ये तो मैं तुम्हें उसमें डाल देता. फिर मैं स्ट्रेस करने की कोशिश कर 9:30 तक क्लास स्टार्ट. राइट. राज का भी मेरे को खबर लेना है, राज से आई थिंक ही कुडंट मेक इट. आई नीड टू स्पीक टू हिम. ओके, सब. Yeah, I made it. Yeah, it's okay. So I think it was a nice interactive session. Okay, I hope you like our channel. Okay, so I think we should take a leave now. Yeah, sure. ठीक है, thank you दीपक. चलो, take care, सब. जय हिंद, जय भारत. Be in touch. जय हिंद. Okay. जय हिंद. Yeah, Hope sure, I will. I'll interview you again after your recommendation. Yeah, sure. Right. चलो, best of luck. Okay. Good night. Thank Take you. care. Bye.